Back to my channel. Today we will discuss approaches, method and technique of teaching English जोटा कि तुम OAVS TGT ପାଇଁ बहुत important तो एथिरो तुम गोटे दुटा क्वेश्चन निश्चय भाव में पाइबो ऑलरेडी मु प्लेलिस्ट बनैछि प्लीज चेक करो जो माने चेक करिना आ चैनल रे नुवा अछ माने सब्सक्राइब कर दियो जो द्वारा तुम डेली अपडेट भी पाइछो ठीक अछि तो अप्रोच कोन मेथड कोन आ टेक्निक कोन तीनटा भीतर बहुत डिफरेंस अछि इंग्लिश रे ओके तो अप्रोच मींस नथिंग इट्स ए थियोरी और फिलोसफी ओके व्हाट इज लैंग्वेज एंड हाउ टू पीपल लर्न इट तो लोक मैंने किपरि शिखिबे कौन कौन रही यार फिलोसफी गुड़ाक लैंग्वेज रो नेचर कौन आम कौन प्रेडिक्ट करछे एज्यूमशन करछे से गुड़ाक आम डिस्कशन करबा ओके फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चरल माने कौन जोड़ा कि आम जेतेबेले कहूचे ओके तो तार गोटे कौन सब्जेक्ट वर्ब आ ऑब्जेक्ट रोचे कि नहीं ओके सेटा होची हमर स्ट्रक्चर जोड़ा कि ग्रामर रूल्स रेगुलेशन बा सेंटेंस पैटर्न ओके तो आम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंबा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आम कहि पाउने तो तार किछि स्ट्रक्चर अछि तो स्ट्रक्चर अप्रोच होची तमर फर्स्ट फिलोसफी ओके नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच कम्युनिकेटिव माने हम जोटा कि वी आर शेयरिंग वन आइडिया टू अनदर ओके जोतरा कि इंटरैक्शन बोली कहूची तो इंटरैक्शन रे हम माने कोन कहूची जोटा कि रोल प्ले मेथड करा होची ड्रामा करा होची तो से माने कम्युनिकेट इंटरैक्शन से माने वन टू अनदर करूचंती सेटा भी तमरो नेक्स्ट अप्रोच रहिची देन इज constructive approach constructive means what it is the discovery or experience तमे गोटे टास्क देले से माने निजे निजे डिस्कवरी करिवे आ से माने निजे बाहर करिवे ओके कौन रूल अच्छी से माने निजे एनालाइज करिवे किछि क्वेश्चन देले से माने जानि परिबे से को टाइप रा हमें प्रोसेस करबा ओके देन इज नेचुरल अप्रोच नेचुरल माने जोडा कि किए दिचंती क्रेशन एंड टेलर प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड सो नेचुरल मीन्स लैंग्वेज एक्वायर्ड लाइक ए मदर टंग आमे जेंति मदर टंग को सिखुचे सेमिति आमे इंग्लिश को भी सिखिबा को पड़िबो ओके तो लैंग्वेज लर्निंग करने को पड़ो ओके नॉट लैंग्वेज एक्वेरिंग ओके जमी आमको ओडिया जोड़ा कि आम ऑटोमेटिकली शिखी जाऊे कौटी कौन कहवा विदाउट डूइंग एनी ग्रामर ओके जड़े किसी न पढ़िया पिला भी से कर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भलसे कथा हो पार ओके सेमती टीचर यूजेस विजुअल एंड कॉन्टेक्स्ट नोट ट्रांसलेशन सो यू हैव टू फॉलो द डायरेक्ट मेथड ओके टू द डायरेक्ट आम जो पढ़ेबा ताहले से माने डायरेक्ट बुझी पारिबे ठीक अछि देन इलेक्ट्रिक अप्रोच इट इज द मिक्स डिफरेंट अप्रोचेस डिपेंडिंग ऑन द लर्नर नीड्स तो अकॉर्डिंग टू द लर्नर यू हैव टू प्रेजेंट ओके तो को टाइप रो पिला अछंती डल अछंती कि इंटेलिजेंट अछंती कि ताको को वे रे पढेले से माने बुझी पारिबे सेटा तमर गोटे अप्रोच आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ नेक्स्ट देखिबा मेथड कोन रहिछि मेथड मीन्स व्हाट इट्स ए प्लान टीचिंग प्रोसीजर तुम को प्लान रे पढ़ेबो हाउ यू विल टीच टू देम ओके फास्ट देखिलो सेडा होची थियोरी बा फिलोसफी मेथड मीन्स इट इज द प्लानिंग ओके फास्ट यू हैव टू डू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बा जीटीएम तुमको फुल फॉर्म भी आसीबो जीटीएम रो फुल फॉर्म कोन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मीन्स यू हैव टू ओल्डेस्ट मेथड एटा सबटू ओल्डेस्ट मेथड बोली भी कहा जाउची ओके तो आगो काल रे हमर केमती पढ़ा होतला फास्ट इंग्लिश पढ़ेबे पुनी ताको ओडिया रे कहिबे पुनी आउथरे इंग्लिश पढ़ाउची तो एटा गुटे तमर ट्रांसलेशन मेथड हे जाउची ओके तो राम गोस टू स्कूल जेमती कि राम स्कूल को गला एमती पढ़ाउची कि नै सेटा हे तमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नेक्स्ट देखिबा डायरेक्ट मेथड होची नो ट्रांसलेशन एज यू हैव टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश okay this is a pen means this is a pen you are not translating here okay so directly we are saying so direct method next होची and audio lingual method it is very important audio lingual method को हमें drill method भी कहि परिबा बा आरबी मेथड भी कहि परिबा तुमको एडा भी क्वेश्चन आसीबो audio lingual रो आ गुटे नेम कोन एडा होची आरबी मेथड ओके where it is based on habit formation or repetition गोटे जिंस को जदि तुम बारंबार सुनिबो बारंबार कहिबो ताहाले जाय कि तमरो प्रैक्टिस हबो ठीक अच्छे तो सेटा आम कौन कहबा ऑडियो लिंगुअल मेथड बोली कहबा नेक्स्ट इज सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशनल मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को लेके आम मैंने कथा हबा ओके सपोज तुम रेलवे स्टेशन अच्छो सेठी केमती कथा हबो सपोज तुम इनसाइड द क्लासरूम अच्छो सेठी केमती कथा हबो आउटसाइड द क्लासरूम अच्छो सेठी केमती कथा हबो तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर टॉकिंग ओके विथ वन टू अनदर दैट्स ए सिचुएशनल लैंग्वेज लर्निंग नेक्स्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इट इज सीएलटी तो फुल फॉर्म भी आछे एथरो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सो इट फोकस ऑन रियल कम्युनिकेशन तो आम वन टू वन केमती रियल लाइफ रे कथा हबा ओके तुम हॉबी विषय रे तुम स्ट्रेंथ वीकनेस विषय रे कथा हबा केमती आम कम्युनिकेट करबा सेडा गोटे तुम रही नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग तुमको एटा भी फुल फॉर्म आसे सीएलटी रो फुल फॉर्म आसे टीबीएलटी रो भी फुल फॉर्म आसे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग
ओके तो तुम टास्क दब ताको कंप्लीट करने कह ओके तो सेटा हूँ तुम टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग स्टूडेंट लर्न बाय कंप्लीटिंग मीनिंगफुल टास्क ओके तो आज तुम 5टा टास्क देल से 5टा टास्क को से नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट साइलेंट वे को किए देचे कैलाबो ओके सो द इट इज टीचर स्पीक्स लेस स्टूडेंट्स डिस्कवर लैंग्वेज देमसेल्फ तो तुम किसी वर्क देदेले से निजे निजे साइलेंट वे रे से करेंगे ओके then the suggest pedia so it is given by Lonserov okay please remember the word which is coined and associated with the term okay so learning is a relaxed musical atmosphere तो ये कौन कहले हमें टीचर प्ले सॉफ्ट म्यूजिक तो म्यूजिक हमको बहुत एनहांस करे हम डिप्रेस हेले भी हम म्यूजिक सुनु ओके तो म्यूजिक माध्यम रे पढ़ेले पिला को बेसी अट्रैक्ट करियो बोली ये कहचंती तो एमिति तो हमर 8टा कोन रहिछि पिले एगुडा को रहिछि मेथड्स गुडा को ओके मेथड्स ऑफ टीचिंग देन देखिबा तमरो कोन टेक्निक माने को टेक्निक रे तुम माने यूज करिवो व्हाट एक्टिविटी विल वी यूज ओके तो फर्स्ट होचे क्वेश्चन आंसर टीचर आस्क द क्वेश्चन एंड द स्टूडेंट रिप्लाई तुम जोटा कि क्लासरूम रे करबा उचित नेक्स्ट इज रोल प्ले मीन्स यू विल गिव द टास्क देम एंड दे विल गिव द एक्शन ओके जेमती ग्रुप डिस्कशन हो कि ड्रामा मेथड हो कि से माने करिवे नेक्स्ट इज ड्रिल मेथड मीन्स सेम थिंग यू विल रिपीट अगेन एंड अगेन then storytelling just you have to give some line once upon a time means next line se mane tiyari karibe storytelling then dictation so improve listening and writing jodi detect korcho se mane shunibe au seta ko lekhibe bi next hoche flash card or chart for vocabulary you have to make some chart or vocabulary they can remember it then group or pair work तो किछि किछि ग्रुप जदि कर देबो से माने 5 जण हेकि से माने रिप्रेजेंट कर परिबे एंड लैंग्वेज गेम लाइक बिंगो स्पेलिंग रेस जेमति कि तमरो डिफरेंट टाइप रो पजल गेम गुडा कहछि से माध्यम रे भी से माने सिखि परिबे देन होछि एरर करेक्शन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर तो एरर करेक्शन बहुत कष्ट तो बट तुम डेली हैबिट करिवो जदि सेटा ठीक हे जिवो देन स्टोरी कंप्लीशन स्टूडेंट फिनिश एंड अनफिनिश्ड स्टोरी तो किसी गोटे लाइन देव 3टा लाइन तापर से कंप्लीट करिया को कहबो ओके तो एतिकी रहिला तमरो टेक्निक मेथड और अप्रोच तो एटा को स्क्रीनशॉट मार के रखो अप्रोच माने कोन बुझबो व्हाई वी टीच लाइक दिस ओके कोन कोन फिलोसॉफी अछि मेथड माने तुम प्लान बनेजो हाउ यू विल टीच एंड तार एक्शन कोन रोचो कोन कोन एक्टिविटी करछो सेटा अछि टेक्निक बुझियला एबे देखिबो तार कोन एमसीक्यू गुडा को the broadest term reflect the teacher belief how language are learned is called केमिति हमें language शिखिबा ताको हमें कोन कहबा approach कहबा ठीक अछि next so which method is also known as the traditional method हमें कहा कहबा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कहबा जेहेतु एटी फोकस करा अछि ट्रांसलेशन आ मेमोराइजेशन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच मेथड ट्रांसलेशन स्ट्रिक्टली अवॉइडेड को मेथड रे ट्रांसलेशन को पूरा अवॉइड करा अछि सेटा अछि तमर कोन डायरेक्ट मेथड ओके नेक्स्ट इज ड्रिल एंड रिपीटेशन आर मेन फ्यूचर्स ऑफ ड्रिल रिपीटेशन कोथि अछि तमर ऑडियो लिंगुअल मेथड रे रहिछि जोटा कि बी होछि तमर राइट आंसर ओके which approach uses the real life communication and interaction कोथिरे तमर real life communication होछि जोटा कि communication process रे एठी हिं अछि क्वेश्चन आंसर होछि नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच कोन जोथिरे कि तमर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एगुडा को पैटर्न को फॉलो करिवो स्ट्रक्चर को फॉलो करिवो पैटर्न को फॉलो करिवो ठीक अछि सेटा को हम कोन कहबा स्ट्रक्चरल अप्रोच कहबा साइलेंट वे मेथड किए देथिला तुमको एबे कहली मने रखथिबो ओके कैलैब ओके प्लीज रिमेंबर दिस वन नेक्स्ट इज सजेस्टोफोबिया वाज डेवलप्ड बाय एटा कि डेवलप करिसंती तमर बी आंसर लजनप ओके नेक्स्ट इज टास्क बेस्ड लर्निंग बिलोंग्स टू व्हिच अप्रोच जोटा कि टास्क दिया होउची आ तांको काम आदाय करा होउची ताको हम कोन कहबा कम्युनिकेटिव अप्रोच बोली कहबा ओके प्लीज रिमेंबर द टाइटल ओके टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग ओके नेक्स्ट इज टीचर एक्सप्लेन्स रूल्स स्टूडेंट मेमोराइज एंड ट्रांसलेट द सेंटेंस दिस इज द मेथड ऑफ जो जदि तुम ट्रांसलेट आसिला चल को मेथड जीवो ट्रांसलेशन मेथड जीवो कि नहीं ओके तार आंसर होची ट्रांसलेशन मेथड देन व्हिच इज नॉट द टेक्निक ए भितर कोडा टेक्निक नुह बोली पचारची रोल प्ले गोटे टेक्निक क्वेश्चन आंसर भी टेक्निक देन स्टोरी टेलिंग भी टेक्निक बट कम्युनिकेटिव इज द अप्रोच तो आंसर कोन हबो अप्रोच ऑलरेडी दिया जायछि से डी होची तमरा so एबे देखियो 12 नंबर क्वेश्चन इन डायरेक्ट मेथड वाज popularized in which century it is popularized in 19th century okay
So now next question is the natural approach emphasize. Natural approach कोटा को emphasize करे जोड़ा कि comprehensible input, जोड़ा कि तमे क्रिएशन थ्योरी देछि लर्नर एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली, जोड़ा कि मदर टंग आमे जेमिति शिखुचे आमे सेकेंड लैंग्वेज भी सेमिति शिखिबा दरकार बोली से कहिसंती. ओके, व्हाट व्हिच इज इलेक्ट्रिक अप्रोच, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. तो आमे जानू इलेक्ट्रिक मेथड मीन्स व्हिच इज फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस. ओके, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, इट इज मिक्स्ड वन. ओके, तो जहाँ को जो अप्रोच दरकार तुम मिक्सिंग करके भी कर पारिबो बोली से कहिसंती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. The term communicative competence was introduced. Communicative competence CC is defined by Delheims. Okay, please remember this question. Okay, so communicative competence means कौन जोड़ा कि तुमरो beyond grammar knowledge, किसी ग्रामर नॉलेज लेस थिले भी तुम स्पोकन इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश करके कहि पारिबो. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following technique CLT by communicative language teaching is introduced? It is always involved in the role play and group discussion. जोटार आमे एक्शन करूची आ डिस्कशन भी करूची. नेक्स्ट, which one is known as army method? ऑलरेडी मु इटा डिस्कशन कला बेले ही कहिची आर्मी मेथड आमे कहा कहबा जोटा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, जेहेतु एटा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 टाइम रे हेतिला सेति को हम कोन कहबा आर्मी मेथड भी कहि परिबा. ओके, लर्निंग बाय डूइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू. लर्निंग बाय डूइंग जोटा कि आमे करिबा आ सेथिरु आमे सिखिबा, तार आंसर कोटा हबो तम मानकर जोटा कि टास्क बेस्ड लर्निंग. ओके, गोटे टास्क देबा तार आउटपुट कोन बाहर करिबा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज ऑफ द डायरेक्ट मेथड. So here the answer is oral question answer practice. Whenever you are practicing the direct method without using the translation, it's known as the technique of direct method. Okay, then which is not the characteristic of grammar translation method. Grammar translation method कोटा नुहि बोली पचारछि. Okay, तो it emphasize on oral communication. एटा हमर सबबेले oral को focus करे, but memorization, focus on written text and translation patience. So everything is involved here. The next question is which method introduced the situational teaching in classroom. So it is all about the situational language teaching.